Hello students, the question is a circular loop A of radius capital R carries the current I. Another circular loop B of radius small r, which is equal to capital R upon 20, is placed concentrically in the plane of A. The magnetic flux linked with loop B is proportional to option A capital R, option B square root of capital R, option C capital R to the power 3 by 2, and option D capital R square. So the problem is based upon the topic magnetic field, and in this particular problem there are two loops. This is loop A, the bigger loop, and having the radius of capital R. Now concentric with this particular loop A, there is another loop, a smaller loop named as B, and the radius of this inner loop, which is loop B, is small r. So this is the radius of the loop B, small r, and the relationship between small r and capital R is small r is equal to capital R upon 20. And we have to find out the relationship between magnetic flux linked with loop B and the radius of the bigger loop, that is phi, which is related to the loop B with the radius r. So that is the main aim of this particular problem, the relationship between phi b, which is the flux linked with loop B, and the radius of the bigger loop. Now in this particular problem, the loop A, it is given that loop A is carrying a current of I. So this is the current which is flowing in loop A, and due to the flow of current in loop A, this current I, there is a magnetic field at the center of this two loop arrangement. Now to find out the flux linked with the loop B, we use the formula BA cos phi or cos theta, BA cos theta. So this is the formula to calculate the flux linked with loop B. Now B here is the magnetic field inside the loop B. Now the magnetic field which creates inside the loop B is due to the current flowing in loop A, and due to this loop A's current, the magnetic field inside this particular loop B is almost uniform. The reason is the radius of the inner loop is very small as compared to the radius of the outer loop. So we can say that at this point, which is the center, the magnetic field is basically mu naught I upon 2r, because this is very small radius. So we can assume as an approximation that the magnetic field at the center or at any point inside or at the periphery of the loop B, it remains same. It is almost same. The reason is small r is very less than capital R. That's the key concept here. That's the key thing which we have to analyze here, that the magnetic field is almost uniform. We can approximate it to be uniform. In a exact manner, it is not uniform, because at the this particular point, which is the periphery or the circumference of loop B, the distance of this point is smaller as compared to capital R, but the difference is very less because small r is very less as compared to r, and we can approximate the magnetic field to be uniform at inside this particular loop B, and its value is given by mu naught I upon 2r. And we have to multiply this thing with area of loop B, because we have to calculate the flux linked with loop B. So the area is pi into small r square into cos theta. Basically cos theta is the angle between the magnetic field and the area vector. Magnetic field direction is this direction, and the area vector is also in this direction. The magnetic field and the area vector are having the same direction. So cos 0 is having the value of 1. Now putting the value of small r here,
mu naught I upon 2r. Small r is capital R upon 20, its whole square. So this becomes mu naught I upon 2r into pi multiplied by r square upon 400. Now this one power cancels and we get this result as mu naught pi I r upon 800. Now we can easily see that this particular flux linked with the loop B is directly proportional to R. So we can say that option A is correct here. Option A is the correct answer. तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कहा गया है कि एक सर्कुलर लूप है, लूप A, जिसकी की रेडियस है कैपिटल R और इसमें करंट फ्लो हो रही है I. दूसरा एक सर्कुलर लूप है, लूप B, जिसकी रेडियस है स्मॉल r, जो कि बराबर है कैपिटल R अपॉन 20. ये इसके कंसेंट्रिक है, दोनों के सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, सेम है, सेम प्लेन में है दोनों ही पर्टिकुलर लूप. मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होगा लूप बी से, वो हमें बताना है कि प्रोपोर्शनल होगा. क्या वो r के प्रोपोर्शनल होगा, क्या वो स्क्वायर रूट r के प्रोपोर्शनल होगा, क्या वो r टू द पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होगा, या वो r की पावर 2 के प्रोपोर्शनल होगा. तो यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला हम जानते हैं, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए. बी डॉट ए को एक्सपेंड करके हम लिख सकते हैं बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर. मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड दिस पर्टिकुलर लूप बी हम पूरा यूनिफॉर्म मान के चल सकते हैं. द रीजन बीइंग कि यहाँ पे जो रेडियस है इसकी इनर लूप आर की, इनर लूप बी की जो स्मॉल आर वैल्यू है वो काफी स्मॉल है कैपिटल आर से, क्योंकि हम जानते हैं आर अपॉन 20 वेरी लेस होगा कैपिटल आर से. तो इसलिए इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन लूप ए, चाहे इसके किसी भी और पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड कहें, चाहे इसकी पेरिफेरी पे हम मैग्नेटिक फील्ड कहें, वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा. उसमें जो डिफरेंस होगा उसको, उस माइन्यूट डिफरेंस को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन दिस लूप ए, जो कि बराबर होता है, फॉर्मूला हम जानते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2r के, तो उसको हम थ्रू आउट द लूप यही वैल्यू लेके चल सकते हैं. तो यहां में हमने म्यू नॉट आई अपॉन 2r वैल्यू पुट करी. ए होगा एरिया ऑफ लूप बी, जो कि होगा पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस स्मॉल आर है. और कॉस थीटा अगर हमें निकालना होगा तो बी और ए की सेम डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर की और मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉस जीरो की वैल्यू 1 के बराबर होती है, वो हम पुट करेंगे यहाँ. फिर उसके बाद हम स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर अपॉन 20 पुट करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है म्यू नॉट आई पाई आई अपॉन 800 इंटू यहाँ पे आर. या हम कह सकते हैं दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. सो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा. सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.